डॉक्टर साहब, जब मैं ये रिसर्च शुरू की मैंने 2009 में, मेरा भी यही सवाल था कि आखिर मसला क्या है, और इंडिया उस वक्त बहुत हल्का था। इंडिया भारी हुआ है डॉक्टर साहब मार्च 2010 से। हम इसको पूरा मॉनिटर कर रहे थे, इसकी पूरी मीडिया की सूरत-ए-हाल को मॉनिटर कर रहे थे, और उनकी जो बेस थी वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं डॉक्टर साहब, और ये बड़ी कंफर्म और ऑथेंटिक बेस है कि जेम्स वुल्फ थे डॉक्टर साहब, ये वर्ल्ड बैंक के 10 साल प्रेसिडेंट रहे, सरबराह रहे, आप जानते होंगे। और इन्होंने एक सेमिनार मुनक्किद किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें 2000 इकोनॉमिकल एक्सपर्ट को बुलाया गया था, और खुद अमेरिका से 300-400 जो बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने शिरकत की थी। और मैं अब एज इट इज उनके अल्फाज आपके सामने कोट कर रहा हूं। वो उस दौर में ये कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप पैसे वाले यहां पर क्या कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसका जो इस मौजू का जो मौजू था, इस सब्जेक्ट का मौजू था, उसका नाम था द बिग शिफ्टिंग कमिंग। अब उन्होंने कहा कि आप यहां पे क्या कर रहे हैं, आपको ये इल्म नहीं है कि अब तक की दुनिया के अंदर 80% दुनिया का पैसा अमेरिका ने और यूरोप ने यूटिलाइज किया और एंजॉय किया। लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा यह है कि आप फौरी तौर पे यहां से अपना काम समेटें और बर्रे सगीर का रास्ता अपनाएं, जहां पर आइंदा आने वाले 40 सालों का कैश फ्लो है 80%। और आप बेस करें पाकिस्तान को, आप बेस करें चाइना को, और आप बेस करें ईरान को। ये एज इट इज मैं आपको अल्फाज बता रहा हूं जो उसने लेक्चर देते हुए कहा। इसके बाद इंडिया की आंखें फट गई कि आखिर मसला क्या है कि जहां पे इतनी बड़ी शिफ्ट आ रही है, और ये शिफ्ट क्या है। तो बेसिक शिफ्ट ये थी कि टोटल दुनिया का 80% मटेरियल जो है वो अब चाइना के हाथ में चला गया, और चाइना इस पूरी दुनिया का सप्लायर बनने जा रहा है। जब सप्लायर बनने जा रहा है तो फैक्ट्रियों की तादाद लाखों से बढ़ के करोड़ों में हो जाएगी। करोड़ों में करने के लिए उसने जो दूसरी सरजमीन अपनाई है, जो उसको सबसे वफादार लगता है और जिसने अपनी वफादारी का भरपूर सबूत उस वक्त चाइना और इंडिया की जंगों में दिया, चाइना का साथ देते हुए, जब चाइना की तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता था, उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। कुदरती तौर पर पाकिस्तान के अंदर यह प्रोजेक्ट इसलिए अहम तरीन है कि यह प्रोजेक्ट नहीं है, यह विफाक की एक जंजीर बन गया है डॉक्टर साहब। चाइना को एक मजबूत विफाक की जरूरत है जो पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क को शायद ना भाए, खासतौर पे इंडिया को, क्योंकि इंडिया का तो सोच ये थी कि पाकिस्तान को तोड़ दो, पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, और जहां से गैस पाइपलाइन आनी है उस सूबे को अलग कर दो जिसका नाम बलोचिस्तान है। इसलिए वहां पे इंसर्जेंसी फैलाई गई और दहशतगर्दों के जरिए ईरान के ऊपर सुसाइड अटैक कराया गया, जिसमें इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के रोजे पे भी अटैक कराया गया। और जो ये एपीसी में झगड़ा होने जा रहा है, एपीसी में जो सियासतदान झगड़ा करने जा रहे हैं, जो हमने सुना फैसल मोहम्मद से, उसको क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये झगड़ा तो करके, ये मैं आपको एक बात पहले तो मैं आपको ये वसूख से कह दूं, इनके बाप दादों में हिम्मत नहीं है कि अब ये इस प्रोजेक्ट को रोक ले। मैं तो कहता हूं अब अमेरिका में भी हिम्मत नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट को रोक ले। जो तीर चलना था वो चल गया, लेकिन ये घुसपैठी है, ये जो केमिकल वेपन इंडिया के यहां पार्लियामेंट में मौजूद है, ये सियासी जमातों में मौजूद है, ये जहर फैलाएंगे इससे, ये इसको फिरका वारियत की तरफ लेके जाएंगे, ये इसको शिया गैस डिक्लेयर करवाएंगे, ये इसको पाकिस्तान के अंदर एक अजीब कि जेम्स वुल्फ थे डॉक्टर साहब, ये वर्ल्ड बैंक के 10 साल प्रेसिडेंट रहे, सरबराह रहे, आप जानते होंगे। और इन्होंने एक सेमिनार मुनक्किद किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें 2000 इकोनॉमिकल एक्सपर्ट को बुलाया गया था, और खुद अमेरिका से 300-400 जो बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने शिरकत की थी। और मैं अब एज इट इज उनके अल्फाज आपके सामने कोट कर रहा हूं। The first thing I'd like to say is that, harking back to my own experience, I grew up in a world in which, for decades, there was 1/6 of the world by the year 2000, 1 billion people, who had 80% of the world's income. And then there were 5 billion people who were in the so-called developing world that had 20% of the global income. And I took an interest in that 20% through activities in foundations and other things, largely because I couldn't understand how the world would continue in an inequitable distribution of 5 billion having 20% and 1 billion having 80% of the world's GDP. It stood there in the post-war years with varying numbers, of course, in terms of the global population, but proportionately, that was the sort of relationship, this 80-20, which existed for decades. But came the last decade of the last century, and moving into this new century, we're seeing for the first time a swing
which now has that 80-20 somewhere closer to 70-30 or 72-28 or some such number. And that is an important and rapid change which has occurred. And it's brought about a change which has been very evident in the way in which international institutions function and in which indeed the global economy functions. So much so that as we look out, the so-called 80-20 that I and my contemporaries grew up with is now looking at a very, very different future. It is the future that you will face. It is a future of 9 billion people on the planet by the year 2050. Of the 3 billion extra that have been added to the planet or will be added to the planet from the year 2000, about 100 million goes to the rich countries and 2.9 billion goes to the developing countries. So come 2050, it's not 1 billion and 5 billion, it's 1.1 billion and 8 billion, or close to it. That is a huge change, dramatic change. The other consequential change is that the structure of the economy is being driven both by the population development and also by modern technology, which has allowed the conveyance of ideas and innovation to move to the developing world. And so the projections today are that that old 80-20 with which I grew up for decades will become 35-65. 35% for the billion one in the rich countries and 65% for the people in the developing countries. That is turning the world on its head in terms of the world that I grew up in. But it is the world that you're going to work in. And it is not a trivial change. It is a change of monumental importance. So much so that by 2050, China and India, the two countries that I have, of course, the leading countries in the developing world, will constitute 50% of the global GDP. 50% of the global GDP. So much so that by 2050, China and India, the two countries that I have, of course, the leading countries in the developing world, will constitute 50% of the global GDP. 50% of the global GDP. That is the consensus estimate. But let's say we're off 5%, it's 45% of the global GDP. It's nonetheless a monumental switch in terms of economic power. It happened last in 1815 when China and India were 50% of the global GDP. And it happened before that in the year 1500. And in the period from 1815, at various times, it's been approaching that. But with communism and with the change in governance in China and with the greater development in terms of the Industrial Revolution in the West, you got to a point where after World War II, China and India were together 2% of the global GDP. So the growth in terms of China and India and of Asia generally is such that it is not just some modulation of former trends. It is an absolutely fundamental change in the way the world is balanced. I remember I was at a meeting of the G7, G8, the first time that the people from the developing world leaders were invited. 7 or 8 leaders were invited by Jacques Chirac to a meeting that was held in France. You'll be familiar with the fact that the G7, G8 meet once a year in June or July and generally, until recently, decide what they think is going to happen with the world, and then they might tell a few people outside. Well, it changed at that meeting. And I remember that the first person to speak was Hu Jintao from China, who made a very elegant speech about China and about the growth and about interdependence between China and the rest of the world. The Prime Minister Bajpai from India then spoke, I think probably eloquently, but I couldn't understand his English very well, so I can only assume that it was another brilliant speech. But then President Lula from Brazil got up and said rather charmingly, if only my parents could see me now. I came from a very poor family, and to see myself here with you, President Chirac, and with you, the Prime Minister of England, and you, the head of Germany, and you detailed the people that were in the room. He didn't mention the President of the World Bank, but he did mention the other minor people that were there. And then he said, but I'd like you to consider something, and maybe next year you should have your meeting in Brazil. And the reason you should do that is because you should start getting used to the fact that in another 10 or 12 years, 5 of you are not going to be here. And you will be replaced by my friend from China and my friend from India and by myself, and we'd like you to get used to it so that you can come see us. Well, it was sort of prescient because, as you know, when the economic crisis hit, very quickly it moved from a G8 issue to a G20 issue. And now the G8 is part of the past, and the G20 is the new institution that is there. And it again fits into the prospective development of which I spoke, which is that the weighting of the planet is now moving in different directions.